Namaste parents, but today I'm not for you here. Today I'm for your children. मैं आज अपने बच्चा लोगों के लिए यहाँ हूँ और ये पॉडकास्ट स्पेशली बच्चों के लिए है for our growing minds. And today I have just here for the big wisdom for that. क्या है वो big wisdom? आपसे भी क्वेश्चन है और आज मेरा ये क्वेश्चन बच्चा लोगों से भी है. Any guesses? Today I'm going to explore something which is quiet, which is gentle, yet it is the most powerful tool for your childhood wisdom, for your inner strength. Any guesses it is what? It is a silence, and this silence, it's not just quiet. Silence is not just sitting quiet, it is bigger than that, because it can change everything around you, not in your outer world but in your inner world too. So that is why today we are going to explore the silence and how the silence is most powerful. Before I detail it, let me explain. Let me just put a question to you. Have you ever closed your eyes and sit quiet? कभी आप शांति से बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके? और अगर हाँ तो आपने क्या सुना? क्योंकि जब हम शांति से बैठते हैं अपनी आंखें बंद करके तो you may hear birds chirping, you may hear like I'm sitting in the mountain. जो अगर आप भी माउंटेन में कहीं बैठे हैं तो splashing water sound, or maybe you can just hear your heart beat or the wind blowing. Because when the outer world, you are shutting down the outer world with closing your eyes, you are shutting down the outer world, then only you can listen your heart, your inner voice, your inner wisdom. And your inner voice and your inner wisdom is the only tool, yes, which make you mindful, which make you wise, which let you listen to your heart, which let you think wisely. Because unless or until आप जब तक अपना खुद का inner thought पर आप काम नहीं करते, आप बाहर कुछ भी बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकते. नो मैटर आपके पास कितने स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, नो मैटर आपके पास कितने स्मार्ट गैजेट्स हैं, नो मैटर आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, नो मैटर unless or until you know how to listen your heart, how to walk with your inner wisdom, you cannot grow, you cannot achieve success, my dear children. That is why the silence is the most powerful tool. Even if I talk about the ancient wisdom, and nowadays we say it is a silence, it is more deeper, because since our ancient wisdom, in our ancient wisdom आपको पता होगा कि हमारे ऋषिज, हमारे जो सेजेस हैं, वो कितने सालों तक, वर्षों तक साइलेंस पर बैठते थे, जिसको वो कहते थे मौना. स्पीक विद मी, मौना. कितने ऋषिज, क्यों इतने सालों तक? वो तो कितने सालों तक, मैं तो अभी फ्यू मिनट्स के साइलेंस की बात कर रही हूँ और मैं बताऊंगी कि साइलेंस कैसे प्रैक्टिस करना है. लेकिन हमारे ऋषि मुनीस क्यों इतने सालों तक बैठते थे साइलेंस पे? क्योंकि उनको लगता था, नॉट लगता था, दे वर श्योर कि जब वो साइलेंस पर जाते थे वो अपने आप को यूनिवर्स की साउंड के साथ कनेक्ट कर पाते थे, वो अपने आप को डिविनिटी के साथ कनेक्ट कर पाते थे. Because this is the power of a silence, my dear children. Because when you sit in a silence, तो आप अपने अंदर की divine power को सुन पाते हो. Even if I talk about the, I can narrate a story for you, even in a brief. What is that story? And I can just tell a story on a Hanuman. You know the हनुमान जी हम सबके फेवरेट है. आपको पता है जब हनुमान जी लंका गए तो बिफोर जंपिंग अक्रॉस द ओशन, हनुमान जी sit in a silence. He sat in a silence. और जो वो साइलेंस पर बैठकर he imagined everything कि how I will talk to माँ सीता, जब मैं लंका में जाऊँगा, do it, जब मैं लंका में जाऊँगा तो कैसे जब मैं लंका में जाऊँगा तो साइलेंस को मैं किस तरह से माँ सीता के साथ बात करूँगा, मैं किस तरह से वहाँ पर सारी चीज़ों को एक्टिव करूँगा, मैं किस तरह से अपने सारे एक्शंस लूँगा. Why? How it could be possible? Because जब हनुमान जी साइलेंटली बैठे, मौन पर बैठे, तो अपना इनर विजडम उन्होंने सुना, अपनी इनर स्ट्रेंथ से उन्होंने समझा कि वहाँ जाने के बाद हाउ आई विल बी एक्टिंग, हाउ आई विल बी टेकिंग माई एक्शन इनटू द एक्ट, आई विल टेक, मैं किस तरह से अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. सो दिस इज़ द हो गया, दिस इज़ द पावर ऑफ एक्शंस. सो माई डियर चिल्ड्रन, what I'm telling you, how the silence works.
साइलेंस मेक यू लिसन योर सेल्फ. साइलेंस की वजह से आप अपने आप को सुन पाते हैं, अपना इनर थॉट सुन पाते हैं. साइलेंस मेक्स यू काम व्हेन यू आर अपसेट. साइलेंस आपका बढ़ाता है अटेंशन स्पैन एंड आपका फोकस. इट रेगुलेट्स your vagus nerve. You know what is a vagus nerve? Vagus nerve which connects your mind to your soul, to your heart and to your belly. This is a vagus nerve. इतना बड़ा काम जो vagus nerve का हमारी बॉडी में होता है. So this vagus nerve, you can regulate your vagus nerve by practicing the silence. So my dear children, the silence is the most powerful tool for your mindfulness as well as just increasing your attention span. Silence is the tool when you are able to listen others too, because when you can be a good speaker, you can be a good speaker when you know how to listen others too, and we can listen others only when we know how to listen silence. Because the confident speaker is not when you are talking confidently and speaking confidently, no, unless or until you know how to listen silence, how to understand silence, you cannot listen anybody. Even you cannot listen yourself too. I have told you many times, right? So let's practice the silence for a second. Let's practice the silence for a second. We will have to sit like this, straight, with the spine straight spine, and close your eyes and just take this mudra and just sit in a silence and close your eyes, and then two times we will chant Om, and then we will sit in a silence. Then you will feel the energy of a silence. So like with a straight spine, erect spine, this mudra, and we will chant Om. Deep inhale, let the prana flow to your crown and chant Om. Again, inhale deep, then chant Om. After inhaling, you just let your prana reach to your crown, then chant Om. Let your eyes remain closed and sit in a silence with the erect spine. Silence. Now listen what you can listen. I can listen the wind blowing. I can listen the sound of water. A river is flowing behind me. I can listen the sound. I can listen the silence. I can listen the deep forest silence. You listen your silence, feel it. Okay, slowly open your eyes. How did you feel? That may be weird because it is your first time. That may be energized. That may be full of energy you are feeling. That may be deep. But whatever you have listened, my dear friends, we have to practice this because the silence is the most powerful tool. Even our ancient rishis, the Ramana Maharshi, if I tell you, you know that Ramana Maharshi is the most wise sage from our India, from our Bharat. And when he used to teach their disciples, so sometimes he used to teach everything in a silence. He taught silence. Whenever his disciple asked any number of questions to him, he just kept himself silent and they learned from the silence. This is the power of silence. So we have to practice the silence every day, at least for a minute or for 5 minutes. Or you can just practice the silence before eating your lunch or dinner. And you can just practice the silence even for a minute
before going to your bed, before sticking with your bed. So at least if you are practicing silence for 3 minutes in a day, like a 1 minute before your meal, 1 minute silence before you're going to your school, or even it is not necessary that you are closing your eyes. With your opened eyes, when you are sitting in your classroom and you want to just keep yourself silent, आप बिल्कुल शांति से आंखें खोल कर भी बैठ सकते हैं और just listen, listen and listen. So practice silence, the most powerful tool. So to know more silence क्यों important है, मैं आचार्य अंबिका आपके लिए लेकर भी आई हूँ 21 डे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोर्स इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर साइलेंस एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो हम कुछ क्लासेस में करते हैं. नंबर ऑफ क्लासेस आर देयर. सो ज़्यादा जानने के लिए आप बायो में देखिए और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. मैं आपकी दोस्त आचार्य अंबिका. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.